In the name of Almighty Allah, the Merciful, the Most Compassionate. Beloved students, you may be aware that just we have completed some subparts of the tenses. Now this time just we are going to explain the future perfect continuous tense. You may be aware that this future perfect continuous tense is used for an activity that will be perfect and yet continue in future and nothing else. Say for example here, Ahmed will have been reading the book for 2 hours tomorrow. Or in simplest words, just we can say that future perfect continuous tense is used when an action is to continue till some point of time or some period of time in future and nothing else. Uh, it emphasizes the continuity of an action up to a certain point of time in the future. For example, simply we can say that Ahmed joined the school in the month of March, or by next March he will have been working here for 1 year. Simply अगर हम इनकी पहचान परखेंगे, if we discern very properly the sentences of the future perfect continuous tense, इनकी जो पहचान है उर्दू में या हिंदी में, वो सारे फिक्रे, वो सारे जुमले जिनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन उनसे पहले टाइम दिया गया हो, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, यानी ईद से 2010 ईस्वी से बहुत अरसे से वगैरह वगैरह, तो ये सारी सेंटेंस जो होते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं. Beloved students, I have already written down some formulas, some sentences along with the translation here on the board. Let's consider the board and try to understand that this future perfect continuous, what it shows here. Beloved students, see towards this board. If we talk about the future perfect continuous tense here, especially the positive sentences here, its formula is subject plus shall will, यानी प्राइमरी ये जो सेकेंडरी मॉडल है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी मॉडल इनमें से एक, प्लस हैव यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी से मैंने हैव यहाँ लेना है, प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. यू मे बी अवेयर ऑलरेडी जस्ट आई हैव मेंशन्ड दैट कंजुगेशन ऑफ वर्ब मीन्स टू गिव द 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात यहाँ करनी है, यानी 4 वर्ब में से यहाँ हमें 4th फॉर्म दरकार है. Plus other words, for example, Ahmed will have been watching TV since 2019. यानी अहमद 2019 ईस्वी से टीवी देख रहा होगा. अगर हम यहाँ लास्ट की बात करेंगे रहा होगा, लेकिन यहाँ टाइम हमें ज़रूरी यहाँ मेंशन करना है. अब इस पॉजिटिव सेंटेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस यहाँ बनाएंगे. यह है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस 4th फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, Ahmed will have not been watching TV since 2019. अहमद 2019 ईस्वी से टीवी नहीं देख रहा होगा. अब हम इस नेगेटिव का यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. इसकी जो फॉर्मूला है वो है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस 4th फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. एट द लास्ट मोमेंट जस्ट वी हैव टू पुट हियर इंट्रोगेटिव मार्क. फॉर एग्जाम्पल, विल अहमद हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2019. क्या अहमद 2019 ईस्वी से टीवी देख रहा होगा. अब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यहाँ बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, इसकी जो फार्मूला है वो है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस 4th फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क. अदर वर्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, विल अहमद हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2019. क्या अहमद 2019 ईस्वी से टीवी नहीं देख रहा होगा. Beloved students, इस तरीके से आपने ये जाना कि वर्ब या हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो 4 फार्मूला हमने यहाँ बनाई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिस के लिए हम और 4 सेंटेंस यहाँ दोहराएंगे. मैं बोलूँगा फयाज सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा. फयाज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. फयाज सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा. फयाज विल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. क्या फयाज सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा. विल फयाज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. क्या फयाज सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा. विल फयाज हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. या हम ये जो पीरियड ऑफ टाइम है इससे एक सेंटेंस हम बनाएंगे जिसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ
میں بولوں گا میں یا وہ یا کسی کا نام ہم لیں گے، میں بولوں گا اعجاز بہت عرصے سے اس سے بات کر رہا ہوگا. اعجاز will have been talking to him for a long time. اعجاز بہت عرصے سے اس سے بات نہیں کر رہا ہوگا. اعجاز will have not been talking to him for a long time. کیا اعجاز بہت عرصے سے اسے بات کر رہا ہوگا؟ will اعجاز have been talking to him for a long time. کیا اعجاز بہت عرصے سے اس سے بات نہیں کر رہا ہوگا؟ will اعجاز have not been talking to him for a long time. Beloved students, اس طریقے سے آپ نے یہ جانا since اور for، یعنی for means یہاں period of time and since یہاں point of time. اب مزید اس پہ میں اس کے بعد یعنی سپریٹلی ویڈیو جو بناؤں گا since اور for اس میں فرق کیا ہے. سمپلی آپ کو یہاں سے یاد یہ رکھنا ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی کنٹینیوس ٹینسز، چاہے وہ خواہ وہ پریزنٹ ہو، پاسٹ ہو یا فیوچر ہو، ان میں کنٹینیوس ٹینسز جو ہوتے ہیں، کنٹینیوس یعنی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز جو ہوتے ہیں، ان میں ہم سنس اور فار کا استعمال یہاں کرتے ہیں. سنس اٹ شوز پوائنٹ آف ٹائم اینڈ فار اٹ شوز پیریڈ آف ٹائم. یعنی ایسے سارے الفاظ، سارے جملے جن کے لاسٹ میں رہا ہوگا، رہی ہوں گی یا رہے ہوں گے ہو، تو اس سے پہلے ٹائم دیا گیا ہو، یعنی لائک اتوار سے 2010 عیسوی سے بہت عرصے سے 4 گھنٹے سے لائک جسے ٹائم دیا گیا ہو، یہ سارے جو سینٹنس ہوتے ہیں یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ہی کہلاتے ہیں. بلاؤڈ اسٹوڈنٹس، آئیے اب ہم مزید یہ جو اس کے بعد ہم نے جو ٹاپک اٹھایا ہے پیسویشن کا، اس پہ ہم یہاں فوکس کریں گے.